अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यस्य 90तमं स्थापना समारोहम् आलक्ष्य अद्य मुम्बईनगर्यां विशेषः समारोहः अनुष्ठीयेत। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी RBI at 90 इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसमारोहे मुख्यातिथित्वं भजेत इति विशेषः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंगालस्य जलपाईगुड़ी मयनागुड़ी इत्येतयोः क्षेत्रयोः दुरापादितेन प्रचंड झंझावातेन जनधनहानिमभिलक्ष्य दुःखम् अभिव्यक्तवान्। क्षेत्रीय अधिकारिभिः सह संवादं विधाय प्रधानमन्त्रिणा साम्प्रतिकस्थितिविषये ज्ञातम् अथ समुचितां सहायतां सुनिश्चेतुमपि विनिर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा पश्चिमबंगालस्य भाजपा कार्यकर्तॄन् अभिलक्ष्य अपि अध्यर्थितं यत् ते झंझावात दुष्प्रभावितानां जनानां यथासम्भवं साहाय्यं कुर्युः इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमोत्तर प्रदेशस्य मेरठ इत्यत्र प्रचारयात्रां कृत्वा लोकसभा निर्वाचन प्रचाराय आरम्भसूचकं शङ्खनादम् अकरोत्। एषा नैर्वाचनिक प्रचारयात्रा एतदर्थमपि महत्त्वपूर्णा आसीत् यतः लोकसभा निर्वाचनानां घोषणायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः पश्चिमोत्तर प्रदेशस्य तावत् एषा प्रथमा नैर्वाचनिकी जनसभा आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र उक्तवान् यत् ऐषमः निर्वाचनं विकसित भारताय अस्ति इति। सः एतदपि उक्तवान् यत् विगतेभ्यः 10 वर्षेभ्यः विकासकार्येषु या गतिः आगता सा इतोपि तीव्रतरा जायेत इति। भवन्तः विकासस्य निदर्शनमात्रम् अनुभूतवन्तः। देशः विकासप्रदर्शनमार्गे इतोपि अग्रे नेतव्यः अस्माभिः इति आसीत् प्रधानमन्त्रिणः कथ्यम्। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। प्रवर्तमाने लोकसभा निर्वाचनकाले श्रीलङ्कादेशाय कच्चतीवु द्वीपसमर्पणस्य प्रसङ्गः पुनः प्रकाशमायातः। RTI इति सूचनाधिकारद्वारा लब्धेन उत्तरेण ज्ञातं यत् 74-अधिक-1900तमे वर्षे तत्कालवर्तिना इन्दिरागान्धी प्रशासनेन कस्याश्चित् सहमतेः अन्तर्गतं कच्चतीवुद्वीपः श्रीलङ्कादेशाय अर्पितः आसीत्। सूचनायाः एतस्याः प्राप्तेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी X इति जनसञ्चारमाध्यमे कच्चतीवुद्वीपप्रकरणे कांग्रेसदलम् आक्षेपन् लिखितवान् यत् प्रत्येक भारतवासिने नेत्रोन्मीलकम् अथ विस्मयकरं तथ्यमेतत्। नूतनैः तथ्यैः एतत् ज्ञायते यत् कथं कांग्रेसदलेन निर्दयतया कच्चतीवुद्वीपः त्यक्तः इति। एतेन प्रत्येकं भारतीयः रुष्टः अस्ति। लोकानां मनःसु च एष विषयः दृढः जातः यत् वयं कांग्रेसदले कदापि विश्वासं कर्तुं न शक्नुमः। भारतस्य ऐक्यभावस्य अखण्डतायाः हितानां च दुर्बलीकरणम् 75 वर्षेभ्यः कांग्रेसदलस्य कार्यपद्धत्यामेव अन्वितम् अस्ति इति। तत्रैव कच्चतीवुद्वीपम् अभिलक्ष्य नैर्वाचनिकप्रचारयात्रायां प्रधानमन्त्री कच्चतीवुद्वीपस्य महत्तां प्रतिपादयन् कांग्रेसदलं भृशम् आलोचितवान्। कच्चा थीवु अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं। कच्चा थीवु ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए
मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। श्रीलङ्कादेशाय कच्चतीवुद्वीपसमर्पणम् अभिलक्ष्य तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अपि कांग्रेसदलम् आक्षिप्तवान्। सः एक्स इति जनसञ्चारपटले लिखितवान्, कांग्रेसदलेन कच्चतीवुद्वीपः स्वेच्छया त्यक्तः अथ तदाचरणस्य लेशमात्रमपि ग्लानिः तेषु नास्ति। कदाचित् कांग्रेसदलीयः कश्चन सांसदः देशविभाजनविषये कथयति, कदाचित् च भारतीयसंस्कृतेः परम्पराणां च अपमाननं करोति। एतेन सर्वेण ज्ञायते यत् ते कांग्रेसदलीयाः भारतस्य ऐक्यभावम् अखण्डतां च विरुध्य चिन्तयन्ति। ते केवलम् अस्माकं देशं विभक्तं नष्टं वा कर्तुमिच्छन्ति इति। मद्यनीतिगत प्रवञ्चना प्रकरणे वादश्रवणाय प्रवर्तन निदेशालयः दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालं दिल्लीस्थिते राउज एवेन्यू न्यायालये उपस्थापयेत्। अवधातव्यमेतत् यत् मद्यनीतिगत प्रवञ्चना प्रकरणे परिपृच्छायै अरविन्द केजरीवालः प्रवर्तन निदेशालयीये निगडने अस्ति। मद्यनीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे पुनरपि तदर्थं निगडनादेशः याच्येत इति सम्भावना कथ्यमाना अस्ति। देशस्य पूर्वोपप्रधानमन्त्री अथ वरिष्ठः भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणिः गतदिने भारतरत्न सम्मानेन अलङ्कृतः जातः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या लालकृष्णवर्यस्य गृहं गत्वा तस्मै देशस्य सर्वोच्चनागरिकसम्माननं प्रदत्तवती। सम्मानेन अलङ्कृतिसमये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। दिल्ल्याः रामलीला मैदान इत्यत्र इण्डीदलसंयुतेः महाप्रचारयात्राम् अभिलक्ष्य भाजपा सांसदेन सुधांशु त्रिवेदिना उक्तं यत् एतानि सर्वाणि अपि दलानि श्रीराममन्दिरस्य विरोधे आसन्। एतद्दलीयैः सनातनधर्मस्य सामूहिकविनाशप्रभृतयः सङ्कल्पाः कृताः आसन्। एतैः सनातनदेवदेवतादिषु च आपत्तियुताः टिप्पण्यः कृताः। अधुना च स्वीयान् अपराधान् गोपायितुं परिष्कर्तुं वा रामलीला मैदान इत्यत्र एकत्रीभूय एते स्वीयायाः निर्लज्जतायाः प्रदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति इति। ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। अन्ताराष्ट्रियं नेपाल भारत संस्कृत सम्मेलनम् अचिरादेव नेपालदेशस्य राजधान्यां काठमाण्डूनगर्यां सम्पन्नम् अभवत्। विशिष्टं हि अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनमेतत् भारत नेपालगतं सांस्कृतिकसम्बन्धम् इतोपि दृढयितुं सहायकं सिद्ध्येत् इति अवगम्यते। भारतस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन, नेपालस्य नीत्यनुसन्धानप्रतिष्ठानेन अथ इंडिया फाउण्डेशन इत्येतेन च सम्मिल्य एतस्य अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनस्य आयोजनं नेपालदेशस्य राजधान्यां समायोजितमासीत् इति विशेषः। अत्र उपस्थिताः विद्वांसः परस्परं संस्कृतज्ञानसमन्वितं तथ्यजातं सम्प्रस्तूय देशद्वयगतां समैक्यतां विशेषतः प्रतिपादितवन्तः। अद्यत्वे वैश्विक सन्दर्भेषु संस्कृतवाङ्मयम् अस्मान् कीदृशं दिङ्निर्देशनं करोति इति स्पष्टतया अस्माभिः प्रदर्शनीयमेव। नेपाल भारत विद्वज्जनानां समान चिन्तन प्रणाल्या निश्चयेन समग्रस्य अपि विश्वस्य नेतृत्वं द्वयोर्देशयोः संस्कृतजनैरेव ग्रहीतव्यमिति सम्मेलनम् इदं निर्धारयिष्यति इति मम विश्वासः। संस्कृते या ज्ञानपरम्परा अस्ति सैव भारत ज्ञानपरम्परा, भारतीय ज्ञानपरम्परा, नेपाल ज्ञानपरम्परा समानरूपतया अस्माभिः वक्तुं शक्यते। सा परम्परा अविच्छिन्नतया अद्यावधि विराजते। तस्याः परम्परायाः इदानीं किञ्चित् भारतवर्षे अथवा विशेषतः भारते अध्ययनं प्रारभते। नेपाले अपि तस्य प्रभावः भविष्यति एव शीघ्रतया। अतएव तस्याः या ज्ञानपरम्परा अस्ति तस्याः परम्परायाः अस्माभिः पुनरपि उज्जीवनं करणीयमिति।
केन्द्रीय मन्त्रालयाधीनायाः भारतीय भाषा समितेः मध्यप्रदेशस्य दमोहस्थ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने आदिशङ्कराचार्यः भाषा संस्कृतिः अथ राष्ट्रिया एकता इत्येतं हि विषयम् अवलम्ब्य एकदिवसीयायाः विचारगोष्ठ्याः आयोजनं महाविद्यालयीये सभागारे जातम्। विचारगोष्ठ्यां हि एतस्यां भाषातत्त्वं संस्कृतितथ्यं च सम्मिल्य कथं राष्ट्रियाम् एकतां साधयितुं सर्वथा महत्त्वपूर्णसहायकस्वरूपतां स्वस्मिन् धत्ते इति अत्र समागताः विद्वांसः वक्तारः प्रतिपादितवन्तः। तेषु तावत् मध्यप्रदेशस्य संस्कृतिविभागसम्बद्धस्य आचार्य शङ्कर सांस्कृतिकैकता न्यासस्य आचार्यः स्वामी वेदान्तत्त्वानन्दपुरीवर्यः अथ मुख्यातिथित्वं निर्वहन् विशेषतः एतत् न्यरूपयत् यत् वर्तमानकाले अपि अद्वैतदर्शनमाहात्म्यम् उदरीकृत्य न केवलं भारते एव प्रत्युत सर्वत्र जगति एकात्मतां शान्तिं च स्थापयितुं शक्नुमः इति। एवमेव अत्र समागताः अन्ये अपि विद्वांसः शङ्कराचार्यप्रतिभां प्रतिपाद्य भारतीयसंस्कृतेः समुत्थाने तदीयम् अपूर्वयोगदानम् अभिलक्ष्य सर्वान् सम्प्रेरितवन्तः। ये भारत की धरा पर समय समय पर सनातन धर्म ने अपने शुद्ध धर्म का प्रकटीकरण किया है, चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, पातंजलि के रूप में हो, शंकराचार्य के रूप में हो। हमेशा एक आंधी आई है और उस आंधी में सनातन धर्म फिर खड़ा हुआ, फिर सिद्ध हुआ, फिर पुरस्कृत हुआ, फिर आगे बढ़ा। शंकर श्रम करोति, जो संपूर्ण विश्व के दुख दर्द दूर करके श्रम माने शांति की स्थापना करें, अभी योग बने। देश दर्शन में तो सब जाते हो, किंतु उस श्रृंगेरी मठ के भी दर्शन कर लो। शंकराचार्य की आप सौंदर्य लहरी को पढ़िए तो आपको लगेगा कि क्या बात है, उसमें कितनी लिरिकलिटी है। और उधर जो है शंकराचार्य का जो पूरा अद्वैत दर्शन है उसको देखिए तो उसकी गहराइयों में जो है आप डूबते चले जाएंगे। एतस्य वार्ता प्रसारणस्य समापनात् पूर्वं तावत् प्रस्तूयन्ते प्रमुखाः वार्ताः। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यस्य 90तमं स्थापना समारोहम् अभिलक्ष्य अद्य अनुष्ठीयेत मुम्बईनगर्यां विशेषः समारोहः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी RBI at 90 इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनसमारोहे भजेत मुख्यातिथित्वम्। दिल्ल्याः राउज एवेन्यू इत्याख्ये न्यायालये अरविन्द केजरीवालः अद्य पुनः प्रस्तूयेत प्रवर्तननिदेशालयेन। मद्यनीतिगतभ्रष्टाचारप्रकरणे पुनरपि तदर्थं निगडनादेशः याच्येत इति सम्भावना। राजनाथ सिंहस्य अध्यक्षतायां भाजपा सम्बद्ध घोषणापत्र समितेः प्रथमम् उपवेशनमद्य जयपुरे। अपरत्र जोधपुरे गृहमन्त्री अमित शाहः स्वदलीयायाः लोकसभा निर्वाचनगत केन्द्रीय समित्या सह कुर्यात् विमर्शम्। कांग्रेस दलीयायां केन्द्रीय निर्वाचन समित्याम् ओडिशा बिहार राज्ययोः प्रत्याशिनामानि आधृत्य जातं विचारमन्थनं यथाशीघ्रं भवेत्। दलीयः प्रत्याशिनामोल्लेखः। उत्तरप्रदेशार्थं तावत् दलेन विशेष प्रचारकाणां सूची निष्कासिता। लोकसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य राजनीतिकदलेषु प्रचारपरः कलकलः। मिजोरम राज्ये जोराम पीपल्स मूवमेंट इत्येतत् दलम् आरभेत निर्वाचनप्रचारम्। अथ तमिलनाडु राज्ये DMK इत्येतत् दलं समेत्य दलान्तराणि सन्ति विशेषतः स्वस्वप्रचारकर्मणि समर्पितानि। पश्चिमबंगालस्य जलपाईगुड़ी स्थले प्रचंड वृष्टिझञ्झावातादिवशात् जनपञ्चकं मृतम्, अनेके च व्रणिताः। मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बनर्जी इत्यसौ कृतवती तत्र संवीक्षणम्। प्रधानमन्त्रिणा च दुःखम् अभिव्यक्तम्, अथ समुचित सहायतार्थम् अधिकारिणः सन्ति विनिर्दिष्टाः। अथ क्रीडावार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग इत्येतस्यां हि क्रिकेट प्रतियोगितायां ह्यः दिल्ली कैपिटल्स इत्येतेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं पराजितं। ततः पूर्वमेव गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं पराजितम्। अद्य तावत् मुम्बई इंडियन्स इत्येतत् दलं स्यात् प्रथमजयार्थं राजस्थान रॉयल्स इत्येतत् दलसम्मुखम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।